Hello students, I am Sunita, your English teacher. Welcome you all in our today's class. Today our topic is transitive and intransitive verbs. ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ verbs ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ verbs ਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟਾਈਪਸ ਹਨ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ transitive and intransitive verbs. As we have already learned about subject, object and verb, so now quickly revise. For example, Sita is eating grapes. Sita अंगूर खा रही है. So here Sita is the doer of an action. Sita किसे काम नू करने वाली है. So Sita is called subject. And what is the action performed by सीता सीता ने की काम किया है eating मतलब वो खा रही है तो it means eating is called a verb and what she is eating or who is the receiver at end वो की खा रही है grapes then grapes are called object. We have also learned about what is verb. तो बच्चों जिवें कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ verb ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a word that describes an action or state of a person, place or thing. An event is called verb. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਂ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ क्रिया ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ verb ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ verb ਦੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ. So there are three types of verbs. Verb ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ 3 ਕਿਸਮਾਂ. The first one is transitive verb ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ. The next one is intransitive verb ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ. And the third one is auxiliary ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ. So now today we will read only two types transitive and intransitive verb. First of all, we will learn about transitive verbs. Skarmak kriya. Action that have a direct object to receive that action. Transitive verbs यानी कि स्कर्मक क्रिया केड़ी हुंदी है जेड़ी क्रिया द्वारा सब्जेक्ट द्वारा कीता काम सब्जेक्ट ते ही खत्म ना होके ऑब्जेक्ट तक पहुंचदा होवे उसनू आपां की कहंदे हां स्कर्मक क्रिया. For example, read this sentence. The policeman arrested the thief. Policeman ने किसनू गिरफ्तार किया एक चोर नू. So arrested here an action performed by a policeman which is a subject in this case and it has a receiver which is a thief. सो बच्चों अरेस्टड की है इत्थे एक एक्शन है एक काम है जिहड़ा किस द्वारा किया गया है पुलिसमैन द्वारा और किसनू गिरफ्तार किया गया थीफ नू. सो द पुलिसमैन इज़ अ सब्जेक्ट अरेस्टड जो है वो अपना एक्शन है और द थीफ की वो अपना ऑब्जेक्ट है. सो अरेस्टड फिर केड़ा वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि इस दे नाल की है इस दा डायरैक्ट ऑब्जेक्ट भी है. So now read next sentence. The boys are eating apples. So लड़के की कर रहे हैं apples खा रहे हैं. So eating here is a transitive verb because it has an direct object apples. तो बच्चों eating भी की हो गया transitive verb है क्योंकि इस दे कोल भी की है object है apples. So now read the third sentence. Rahul kicked the ball. So kicked here is also a transitive verb because it has a direct object the ball. क्योंकि बच्चों kicked जो है वो भी की हो गया transitive verb हो गया क्योंकि उस दे कोल केड़ा object है the ball. So these are the examples of transitive verbs. Now we will read about intransitive verbs. अकर्मक क्रियावां action that doesn't have a direct object to receive that action. ਉਹ क्रियावां जिन्हां दे विच सब्जेक्ट द्वारा कीता जाण वाला काम सब्जेक्ट ते ही खत्म हो जावे उसनू आपां की कहंदे हां इंट्रांजिटिव वर्ब.
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ Read the first sentence. He is laughing. Oh, हंस रहा है. Laughing is here intransitive verb because there is no direct object linked with he. ਤਾਂ ਬੱਚੋ laughing जो है इत्थे की है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस दे नाल कोई भी डायरैक्ट ऑब्जैक्ट की वरतों नहीं की गई है सो नाउ रीड द सैकेंड सेंटेंस दे वर्क हार्ड ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ intransitive verb as there is no direct object after the verb work ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ work ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ intransitive verb ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ work ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ direct object ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ in the third sentence ਬਲਰਾਮ ate ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਖਾਦਾ मतलब ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ object ਨਹੀਂ ਹੈ so ate is also called intransitive verb So now we will do an exercise to clear our topic. Say whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive. So ਦੱਸੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ verb ਹਨ ਉਹ transitive ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ intransitive. If the verb is transitive, ਅਗਰ ਉਹ transitive verb ਹੈ then name the object. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ object ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ So read the first sentence. He killed a snake. So बच्चों इत्थे की है So I think you are now clear about transitive verb and intransitive verb. Now do practice from your grammar book. तो बच्चों मैनू आस है कि तुहानू transitive verb और intransitive verb बारे पता चल गया होएगा तो तुसी अपनी grammar book दे विचों इस दी practice करनी है Thanks. Have a nice day.